You can use it directly in some of the questions. Okay. Okay. So there are some applications of this also. Like if I give you a question like find out the number of valid parentheses. Like I have given you some sequence of parentheses, okay, of brackets of length 2n. Okay, this is valid 3. Yeah, this is valid. Okay. Like I have given you this question, set of parentheses, okay, of length 2n. You have to find the number of valid parentheses. Parentheses sequence. So what will be the answer? Like you can think of it in the same way, the R and U path, which we just did. Okay, tell one thing. What is the first point you will note that your parenthesis can't be any more valid? Uh, like you must have solved that question of regular bracket sequence, but here the brackets are limited to just two, opening and closing brackets. So, like, what will be the first point where you will identify that your parenthesis can't be valid anymore? Okay, yeah, when Yes. count of the closing bracket becomes more than the opening bracket. And can you now relate it to the previous question where count of view exceeded the count of hours? Yeah, you can just think of it in, try to think of it in this way. Now do Okay. they become similar question or not? Just write yes or no. Okay. Is there anyone who didn't get? Okay, interchange कर देंगे तो n minus 1. This, okay. See that what I interchanged, like in the previous question. Just let me get. Yeah, I reflected it to accomplish a task of finding the number of invalid ways. All right. So in this question, like the bracket sequence, you don't need to reflect it. You just need to uh, use the previous formula, that is this Catalan number. Okay. There is no need to start from the basic like how to prove it. Okay. It's just an application of Catalan numbers. Yeah, okay. So what about the rest of everyone? I see only 5 to 6 people interacting. Okay. What about the rest? Did you get it or is there any doubt in the previous question or in this question? Okay. Okay. Okay, then I guess everyone understand it. If there is any doubt, just write 0 or you can unmute yourself and just ask.
Okay, I have written another question. Okay, you have to find the number of binary trees with n nodes. Okay, like how many structures are possible. Okay, number of structure of binary trees and nodes. So this for this the answer will also be Catalan number. You can check the proof online if you are interested. But there are some topics like this you will have to remember. Okay. Just to explain who doesn't know what is tree or binary tree, Yeah. like डीपी में बताया था ना, वो एक रिकर्सन ट्री बनाते हैं फ्रॉम वन नोड, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. So every state is a node, and what is the speciality of binary tree is that every state or any node can branch into only two more nodes, at most two more nodes, not more than two. There can be branching with one node, or there can be branching with zero node, which is the last node, or there can be branching with two nodes, but there can't be branching with three nodes, okay, or four, and any more than three. Yeah. Like if I want to draw a binary tree with 3 nodes, then this is a binary tree. This is also a binary tree. A binary tree has left child and right child, and we differ them. Okay, you might think that the structure is same, but here there is these three. This is left child, and here this is right child. Okay, some of the examples, like one can also be drawn like this. Okay, so these are binary trees. If you don't get it, then don't worry, we will teach it in the later classes. All right. Okay, so is there any doubt? Like I'm not seeing any responses. Like, did you get it or not? Okay. 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 Fine. Okay. Uh, like इन्हें कैली नंबर वाला भी वो बता दें क्या? कौन सा? लेबल ट्रीज होते हैं जो. ट्री के बारे में मत बता अभी. या रहने देते हैं, ठीक है. हाँ, बाद में बता सकते. हाँ, फिर तो अपना वही अच्छा, वो इंक्लूजन क्वेश्चन, एक्सक्लूजन वगैरह वो सब करते. वो हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन करा भी. दे. अच्छा. जोर ओके. वाला था नहीं. हाँ, वो ठीक. कल कराना पड़ेगा फिर इंक्लूजन. टाइम नहीं होगा. या फिर वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दें क्या? कल फिर एक्सप्लेन कर देंगे. करा दे अभी, चल कल से ठीक है. स्टार्ट कर देंगे. चल ठीक है. Okay. Just a question. Yeah. Okay. ये थोड़ा सा
अच्छा रुक मैं टाइप कर देता हूँ. Yeah, so the question is basically you are given an array A, all right, and you want to find the sum of XOR of all k tuples, which can be used using the elements of the array. Okay, just like for example, the array is 1, 2, 7, 6. Okay, and the value of k is 3. Okay, so you have to find out. So how many tuples will be found of 3 elements? Like anyone can answer how many tuples will be found from 3 elements. You do you guys? Yeah, 4. You get what tuples are, right? I'm just telling you to take 3 elements from these 4 elements. That is 4c3. Okay, so let's see the tuples. So the first tuple would be 1, 2, 7. The next one would be 1, 2, 6. Next one 1, 7, 6. 2, 7, 6. These 4 tuples will be found, right? And just let me check it. 1, 2, 7, 1, 2, 6. Yeah. Okay. So what you want to find out is this summation right here for all these tuples. Like for the first tuple, or of each tuple, like what will be the XOR of first tuple 1, 2, and 7. That will be right. Just write the XORs of the rest of the 3 tuples. Okay, so did you get the question and what I'm trying to ask? Okay. So if there is, so I'm explaining the question again. You are given an array. Okay, this is your array A, and you need to find the XOR of all k tuples. First, you will need to find the k tuples, k size tuples. Like if there are n elements, then there will be nck tuples. Okay, you just have to select k elements from the n, and all that tuples. You need to find the XOR of the tuple, like XOR of 1, 2, and 7. That would be 4.
XOR of 126 would be 5, XOR of 176 would be 0, and XOR of 276 would be 3. And then you have to return the sum of these, that is 4 plus 5, 9 plus 0 plus 3, that is 12. Okay, so did you get the question? Just write 1 or 0 if you get it not. Okay, all right. So try to think of it. Like, how will you solve this problem? Like, obviously there is XOR, so you can think in some direction of bit. Okay, just a regular like trick to solve some bitwise questions or anything related to it. Just reduce the constraints of AI to 0 and 1. Just don't think anything else. Like if there are bits, then you can think separately for each bit. So better reduce the question just to one bit, which lies between 0 and 1. So सर just सर reduce the एक सोचा constraint था of क्या? सर एक सोचा था बताऊं हाँ हाँ बोल हाँ बोलो. सर जैसे कोई बिट लिया मतलब जैसे सेकंड बिट लिया फिर काउंट कर लिया कि मान लीजिए कि के में है और एन माइनस के में नहीं है ओके फिर सेट्स बनाएंगे कि एक सेकंड नहीं मान लीजिए सर जे जे नंबर्स में वो सेट है और एन माइनस जे में नहीं है हाँ. तो फिर 1 सेकंड सर एक मिनट हाँ फ्रेम कर लो अच्छे से बोल देना. तो जस्ट सेइंग रेगुलर ट्रिक कि क्वेश्चन को इजी बनाना है तो एआई को 0 और 1 में रिड्यूस कर दो. फिर 30 बिट्स के लिए अलग अलग सोच लेना कि प्रायोरिटी कभी कभी प्रायोरिटी देनी पड़ती है 30th बिट या फिर 0th बिट को पहले किसका आंसर पहले लाएं. ये भी एक है. और कभी कभी इंडिपेंडेंट होते हैं सारे बिट्स तो उसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है. जस्ट एआई को 0 1 कर दो फिर सोचो. अब है कुछ अप्रोच आ रहा है. सर मान लीजिए सर जे नंबर में सेट है और एन माइनस जे में नहीं है ठीक है फिर ऐसे करेंगे कि जे में से एक ले लिया और के माइनस वन एन माइनस जे में से के माइनस वन ले लिया तो सेट होगा हाँ और फिर 3 ले लिया के माइनस थ्री थ्री के माइनस थ्री पे भी सेट होगा तो ऐसे सर इसका फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा तो उसको रिड्यूस करके सर एक कांस्टेंट हो जाएगा शायद. देख सकते हैं वो Okay. रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर देंगे या फिर या तुम लीनियर अप्रोच भी कर सकते हो. लाइक कितना बार करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे n टाइम्स ही करना पड़ेगा ना N मैक्सिमम. times. सही अप्रोच है. तो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ अप्रोच कुछ ऐसी ही रहेगी. यही अप्रोच है तो just बता देना. Okay, so what did he just said was, let's say first you form another array B. Okay, array B in which bi represents the number of elements in which ith bit is set. All right, so you check all the numbers bit by bit. Okay, and let's say for 1
the 0th bit will be set. So we will increase the count of B0. For 2, the first bit will be set. So we'll increase the count of B1. For 7, 0th first and second bit will be set. So we will increase the count of B0, B1 and B2. Okay. So first we will store all these in the array B. After that, what we can simply do is, if I take k numbers, okay, so just let me write it. So let's say the total number of tuples in which ith bit will be set. Okay, so the total number of tuples in which the ith bit will be set would be bicj into pi n minus pi, like n minus bi into c k minus j, like when j is odd. J is odd. So how this comes is, let's say there are 5 numbers in which the 0th bit is set. So what I can do is, I will take those. So the value of B0 would be 5. So I will take those 5 elements. Out of that, I will take one element. All right. And from the rest of n minus 5 elements, I will take the rest of k minus 1 elements. Then continuously, I will do this for 3 elements. I will take 3 numbers out of all the 5 numbers in which the 0th bit will be set. And from the rest of n minus 5 numbers, I will take k minus 3. Okay. So did everybody get that? Like, I should write it in equation form. Okay. So j equal to 1 to up to n when j is odd. All right. So is there any doubt? ये क्या represent कर रहा है? क्या? So J. J, let's say J ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम कितने नंबर्स ले रहे हो सेट में से, ठीक है, वो J रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स से अगर के BI नंबर्स में ith बिट सेट है, तो तुम उसमें से एक बार एक एलिमेंट लोगे, ठीक है, और बाकी जिसमें सेट नहीं है, तो एक तुम्हारे पास 1 आ गया, ठीक है, तो वो तो सबका जोर करोगे तो 1 आ जाएगा उस पोजीशन पे, ठीक है. अगर तुम 3 एलिमेंट्स लोगे तो 3 1 है, तीनों का जोर करोगे 1, और रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उन सब में वो बिट 0 है, तो सबका जोर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है. तो जे रिप्रेजेंट वही कर रहा है कि हम कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनमें ith बिट सेट है, ठीक है, उसमें से हम कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. लाइक एक एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक इसी में जो एरे हमें दे रखा है 1 2 7 6. okay, so let's say I am going for the first bit. So 1 the first bit is not set. In 2 the first bit is set. In 7 the first bit is set, and in 6 the first bit is set. So the value of B1 would be 3. Okay, so at one time I will take one of these 3 elements, and from the rest of the elements I will take the k minus 1 k minus j elements. Okay, then I will take all these 3 elements and the other element. Okay, like if I try to take one element, one of these, then n minus bi, that is 1c, so that would become 1c2.
Okay, so that value would be 0. Okay, I can't take one of these and two numbers from this a single number. So that term will become 0. But what I can take is all three these terms. If I try to take all these three terms and one term from this, then also I can't take. Okay, अरे यार, ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा ये एक दूसरा एग्जाम्पल. अच्छा रुक शिवम मैं समझाता हूँ, रुक स्क्रीन शेयर कर देते हैं. ब्लैंक वेबसाइट भी लोड नहीं हो रही. क्या दिक्कत है? अच्छा हो गया क्या? चल जा. लैन गया हुआ है लगता है. अच्छा, नाइस. अच्छा यहाँ देख लो तो ठीक है. अच्छा देखो, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, ठीक है. और हमने बोला यहाँ पे जो भी ग्रुप है उन सब में बिट्स सेट है और यहाँ पे जो भी है उनमें अनसेट है बिट्स. लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट बिट या फिर 0th बिट जो लाइक राइट हैंड साइड से फर्स्ट आता है. तो उस बिट के लिए मैंने B0 ये काउंट किया था. B0 मतलब कितने बिट्स सेट है और कितने अनसेट हो जाएंगे फिर सिंपली n-B0, ठीक है. अब अगर मेरे को वो पार्टिकुलर 0th बिट को ऐसे बिट्स रहेंगे ना, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टपल फॉर्म हो रहा है उसमें ये बिट सेट होना चाहिए, मैं कुछ ऐसा कंडीशन रख रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा टपल में ये बिट सेट होना चाहिए. ये कितने वेज में हो सकता है, अब ये काउंट करेंगे. और सेट क्यों चाहिए? क्योंकि अनसेट हुआ तो फाइनली उसका सम में कंट्रीब्यूशन तो 0 ही आएगा, तो फायदा है नहीं मतलब 0 वाले वेज को काउंट करके. अगर अनसेट है तो उसका सम में तो कंट्रीब्यूशन 0 आएगा, तो फालतू में कैलकुलेशन होगा, कुछ जरूरत नहीं उसका. हमें मतलब है सेट बिट्स है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन शो करेगा सम में तुम्हारा, ठीक है. अब थिंग इज कि इसके वेज कितने होंगे. तुम्हें पता है कि B0 का जो काउंट है वो बिट मतलब सेट है, वो 0th बिट सेट है और बाकी में अनसेट है. तो तुम एक काम करो, यहाँ से एक जन को लाओ और k टपल बनाना है तो यहाँ से k-1 को लाओ. अदरवाइज क्या कर सकते हो, यहाँ से 3 को लाओ और यहाँ से k-3 को लो. k-3 नंबर्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ से 3 कोई भी हो सकते हैं. और 1-3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जोर देखो सबका तो अल्टीमेटली जोर ही होगा. और जोर तभी 1 अपीयर करेगा जब तुम्हारे पास काउंट ऑफ सेट बिट्स ऑड में है. अगर इवन में होते हैं तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ऐसे. सपोज दिस इज इवन केस, तो ये फाइनली इसका 0 आ जाएगा तुम्हारे पास. अगर ऑड ले रहे हो जस्ट लाइक 3, सो दिस विल अपीयर एज 1 फाइनली. अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, 5 लो यहाँ से और यहाँ से k-5 नंबर्स ले लो. सो नाउ थिंग इज तुम ये करोगे कितने वेज में. You know that there are B0 count of numbers from which we have to select any one. So इसका count आएगा B0 C1, ठीक है. Now there are n-B0 numbers from which we have to select any k-1 numbers. Simply multiply कर दो इसको, n-B0 C k-1. Now you keep on doing this for every odd number. So for 3 के लिए भी B0 C3 n-B0 C k-3. For 5 you keep on doing this, ठीक है. Ultimately सबका सम ले लेना. So summation of all these things will be the number of tuples in which your 0th bit is set. इतना क्लियर है सबको? मैंने जस्ट अभी क्या बोला? सर टप्पल में तो 3 एलिमेंट चाहिए पड़ेंगे ना.
टपल में के एलिमेंट्स चाहिए तुम्हें? के एलिमेंट्स। हाँ, टोटल के चाहिए। देखो 1 + k - 1 इज ऑलवेज के, 3 + k - 3 इज ऑलवेज के। सो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं हर बार। सो ये पार्ट क्लियर है ना सबको? अच्छा ठीक है। अब आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? इतना तो कर लिए, 0th बिट के लिए सोच लिए। नाउ थिंग इज 0th बिट ऐसे ही सारा काम करना, फर्स्ट बिट, थर्ड बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, ऐसे अप टू 30 बिट्स काम करते रहना, ठीक है? क्योंकि 1E9 तक है तो 29 या 30 बिट्स तक हो जाएंगे फाइनली। हाँ, आंसर ये होगा कि अब हर बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 की पावर i। लाइक इफ यू फॉर्म ए नंबर, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बिट का, 2 की पावर i। सो जो भी तुमने ये समेशन निकाला था, कहाँ गया? हाँ, जो भी ये समेशन निकाल रहे हो, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर i से, ठीक है? देन उसका भी समेशन ले लो फिर, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 to 30। ठीक है, like this whole thing will be counted। अब क्लियर है हम क्या कर रहे हैं? 2 की पावर i क्यों लिया? किसी को डाउट है 2 की पावर i क्यों जा रहा है? लाइक ये देखो, ये बिट वाइज जो है नंबर्स, अगर कोई बिट सेट हुआ है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 2 की पावर 0 टाइम्स 1। अगर यहाँ पे ये सेट नहीं हुआ है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 की पावर 1 टाइम्स 0। इफेक्टिवली कुछ नहीं हुआ। अगर ये सेट है तो 2 की पावर 2 टाइम्स 1 ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है। फाइनली जो नंबर बन रहा है उसको सम कर दो तुम, जस्ट लाइक वो जैसे नंबर फॉर्म होते हैं वही है। एंड जस्ट मोड का ध्यान रख लेना, क्योंकि ओवरफ्लो करने का दिक्कत है यहाँ पे। तो जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे मोड भी लगा ही देना। एज सच कुछ होगा नहीं, फिर उससे डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, इसका कोड खुद से लिख देना। मैं आज रात तक मैं भी लिख के पेस्ट कर दूंगा, तो तुम टैली कर सकते हो कि आंसर डिफरेंट है या फिर मतलब कोड में कुछ गलती है। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी बता दो, लाइक पूरे क्लास में, पूरे सेशन में, या और भी कोई जनरल डाउट? जिसका हम कॉन्टेस्ट किया था लास्ट वाला, कॉन्टेस्ट लास्ट वाला शेफ का कि फोर्सेस का? फोर्सेस का। अच्छा, सेफ का भी देख लेना। लास्ट टाइम काफी सारे बिटवाइज के क्वेश्चंस आए थे, हाँ। जो लास्ट चैप्टर्स हुआ था, और अच्छे थे क्वेश्चन। उसमें भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। कोड फोर्सेस का दिया था कॉन्टेस्ट? देख रहा हूँ। कोड मैंने फोर्सेस लास्ट वाला मिस कर रखा है सही। लास्ट वाला के दे रखा है। दे रखा है ना? हाँ, देखते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मतलब मेरे ख्याल से सी तक बन सकता है। हाँ, सी तक बन जाना चाहिए। लाइक लास्ट कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में कोई डाउट है किसी को? या कोड सेफ का कॉन्टेस्ट? कोड सेफ में लाइक मैंने देखा था काफी जन ने 3 क्वेश्चन बनाए थे, तो 4th और 5th किससे नहीं बना था? एक मिनट। अच्छा, जिनका डाउट है। हाँ मिलन। डीपी लॉन्ग कॉन्टेस्ट, तो उसके लिए तो हम डीपी के लिए तो फिर अलग से डिस्कशन ही रखवाएंगे। उसमें आधे क्वेश्चन में क्या था डिस्कस हो गया है ना?
आगे के बाकी है। अच्छा, एफ तक ही हुए हैं कि ठीक है, उसका डिस्कशन बाद में अभी रखवाएंगे, अभी नहीं। एक ऑफलाइन क्लास में मिनिमम और पाथ, ओके, कोड शेफ, ओके। Just let me check it. हाँ हेलो, कुछ बोला था क्या अभी? हाँ, मैं कह रहा था कि आगे का भी कराना है या फिर ये डाउट ही बस कराना है? डाउट करा देते हैं। हाँ, बस रहने देते हैं इसके बाद। ठीक। डीपी लॉन्ग कॉटेज में डाउट है, एफ तक हुए हैं। उसके लिए तो अलग से कराएंगे। लास्ट डीपी कॉन्टेस्ट में कहाँ तक हुआ था डिस्कस? एफ तक तो कह रहे हैं। अच्छा, और टोटल कितने जेड है? हाँ, EF हाँ, काफी बचे हैं। जेड का आगे का हार्ड भी है काफी। देखते हैं सेशन, लाइक हम सोचते हैं वेडनेसडे का कराएं, बट उस दिन स्टार्टर्स आ जाता है फिर। अच्छा, तो जिनका डाउट है वो अभी मीट में रह सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम और पाथ शेफ का।